Please start, madam. Good morning. New Indian Express on 12th April 2020 published a news that since the month of April, the Sports Authority of India have hosted a number of events with respect to ensuring the mental well-being of sports community. Mindfulness meditation, health and nutrition during lockdown, coping in the times of crisis are the few programs that were conducted. The newspaper further reported that some of the Indian elite athletes, including a few who had qualified for the Olympic Games, have sought out psychological help to deal with the situation. This issue, it was seen, these issues range from sleeplessness, loneliness, lack of motivation, frustration, and anxiety. Well, are these the only interventions that are needed? Is this the only time that psychological help is sought by the sports community? Don't they need help when they face stress before playing or after losing a match? What about injury? Don't they need boosting their motivation, their stress level during defeats and depressions? These are the prime work of the work profile of sports psychologists. Sports psychology in India needs to be promoted and popularized as it is in the Western countries. With that in mind, we at St. Thomas College, Bhilai, have organized a webinar where efficacy of sports psychology as a discipline will be discussed. We have brought together academicians, mentor and coach, sportsperson in this forum today to share their experiences on the subject. Now, to start with the proceedings, I request Principal Dr. M.G. Roymond to welcome the guests and the participants to today's webinar. Sir, please. Roymond sir, George Matthew Ramban, administrator of. आ रही आवाज मेरी? Yes sir. Hello. Yes sir, we can listen. Very Reverend George Matthew Ramban, administrator of the college. Today's resource persons, Dean Academics, Dr. Vinita Thomas, IQAC coordinator and head of the department psychology, Dr. Devjani Mukherjee, organizing secretary, Mr. Kailash Narayan Verma, dear colleagues, students, Mr. Michael, and all the participants. Today, St. Thomas College Sports Department and Department of Psychology have jointly organized a national level webinar on the topic mental health, a crucial ingredient for success of a sportsperson. Discussion will be done on the importance of psychological interventions on sports persons. Playing any sport brings lots of different emotions like anxiety, happiness, palpitation, stress, depression, fear, etc. Players have pressure of the country, state, district, institutions on their mind, plus their own competitive spirit that can lead to stress. Psychological guidance may be very useful at such times. The blessing of our bishop are always with us, and I welcome His Grace Dr. Joseph Ma Dionysius to this webinar. Very Reverend Father George Matthew Ramban, administrator of the college, and is a constant source of encouragement. Sir,
I welcome you to today's program. It gives me great pleasure to welcome our guest speakers and resource persons. We have with us Dr. Krishnakant Sahoo, who is Professor and Head, Department of Sports Management, Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior. Mr. P.C. Anthony, International Basketball Coach. Miss Lalmin Kimi, the international international player of hockey as well as actress of Chak De India. Mr. Dinesh Kumar Mishra. He is the US scholarship awardee and international basketball player. Who will speak on various aspects of sports psychology. I welcome once again all the staff of this college and participants from all over the country to this webinar. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. To continue with the session, I request Dr. Sumita Singh, Assistant Professor, Department of Psychology, to take over. Sumita, madam, please start. Awaz, sound. Thank you, Thank madam. you, ma'am. Let's start the session. The first session is with Mr. P.C. Anthony from Kerala. I request Mr. Mahendra to introduce our speaker. Good morning, everyone. On this national webinar of mental health, a crucial ingredient for success of a sports person, efficacy of sports and psychology. It's my pleasure to introduce our first speaker of today's webinar, the international coach of basketball, Mr. P.C. Anthony. Sir is presently working as the chief coach of Kerala State Women's Senior Basketball Team. Sir is having an outstanding experience in the field of sports as well as a coach. He has been awarded 3 coaching certificates from FIBA, in which one in year 2005 and 2 were awarded in the year 2014. He has also worked with Basketball Federation of India and NBA, the International Association of Basketball. He is also having the coaching experience in the basketball of more than 15 years, in which he has worked as a coach in 5 national camps. Sir is also having outstanding performance as a player of basketball at national level from 1979 to 1982. Sir has been awarded from the very famous Raja Cholan National Award for the lifetime achievement in the field of basketball constituted by Raja Cholan Trust, Tanjavur, 2018. Now, without wasting too much time, now I invite Sir to share his views. Please, sir. Yes, good morning, my dear friends. I would like to explain how a psychologist can improve the mental strength of a sports person to achieve high-level performance in crucial competition without any fear and tension. Actually, I am not a psychologist, but psychology has played an important role in my coaching career. I was the coach of the Indian team in different international tournaments. Also, I was the coach of Calicut University women team, which won the All India Inter-University Women's Championship continuously 3 years. Presently, I am attached with this Kerala women's team, which won the Federation Cup twice. We are waiting for hat-trick victory this year. So, unfortunately, I am in a quarantine, but this is my surrounding area also comes under lockdown. So, I am not able to give that wide lecture. So I prepared a note on how to improve the mental strength by psychological approach with my experience. I am very happy to be here to give my note regarding the mental strength of the player. As we know, the mental strength of the player is equally important as physical strength.
because of life is all about a combination of body and mind. Human being is created with uh, elements such as body and mind. Preparation of body, as you know, is very important in all games. We do lot of coaching in order to develop the physical stamina of the player. What we lack is that mental stamina, especially when we compare to other countries. We Indians often lose the mental strength when we appear the international games. What we can do for this? How to improve the mental health of the player? I hereby suggest some thoughts on this. I always to be believe that mind is more important than the body in human life. If our mind is strong, we can do wonders in life. In court also, this theory can applicable. The players who have a good mental stamina are always outstanding and praiseworthy. What we lack in our players is that level of mental strength. In order to improve the mental strength, we have to add a lot of activities and counseling section in the coaching camps. Foreign countries like Japan, Australia, etc., most of the players are asked to stay with military forces in order to follow their lifestyle. The lifestyle and the food habits of military force are one of the best model of the formation for both body and mind improvement. Out of world training program like river crossing, mountain climbing, firewalks, etc. will definitely add strength to the candidates. At the same time, team building games and funny games also important in the team formation. If mind wanted to be powerful, our body desire should be controlled, and we have to say no to the bodily inclination like eating tasty foods, playing with late night chat, etc. Minimum food and adequate sleep always strengthen our mind. That even help a player to overcome the difficulties in different culture and climate. Along with that, trust ourselves and trust in God are the two key medicines to improve the mental strength. Players should be exposed to war-like situation often during the coaching session. The classic movie in Chak De India, Coach SRK taking and their team to a restaurant where a fight is happening, and at the end, and the players become united. Players have to face hardship in order to improve mental strength. Simulated life situations and the game should be pre-planned in all coaching sessions well in advance before the games. Celebrate each and every moment of the game. In every shooting, players have to congratulate each other without affecting the game. And during the timeouts, coaches have to inject the confidence till the last breath of the game. जो जैसे कैशुअली में कुछ एक दो टीम है, इन्होंने जो देश में सुप्रीम पावर बना के रखा है, जो जैसे आपका छत्तीसगढ़ टीम है, वो पिछले 20-25 साल में आपका ये देश का सुप्रीम पावर बना के रखा है. वो कैसे बना के रखा है, ये जो कुछ कनेक्टेड है, जो मैं इसमें मेरा नोट में पढ़ा था, जो आर्मी ट्रेनिंग, जो छत्तीसगढ़ टीम ऐसा है, एक टीम है, वो इन लोगों को जो सब डिसिप्लिन, मैं बोलता जो साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हमने जो इंटरेस्ट, जो आर्मी ने क्या फॉलो करता है, जैसे डिसिप्लिन ऐसा कुछ है, वो पूरा आर्मी थ्रू जैसे छत्तीसगढ़ टीम ने बना के रखा है. इसलिए इन्होंने पिछले 25 साल जो लेट स्वर्गीय श्री राजेश पटेल का कोचिंग की वजह से ये इन लोगों ने सुप्रीम पावर बना के रखा है. इसमें इन लोगों ने क्या क्या किया, इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको भाषण दे दूंगा. एक तो टाइमली उठना, इन लोगों ने 4 बजे से, जैसे आर्मी वाला करता है, 4 बजे से सुबह उठकर ग्राउंड में आ जाता है. वो वेदर इट इज विंटर सीजन और समर सीजन, लोगों को कोई इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. 4 बजे ग्राउंड में लोग चालू रख देते हैं लोगों का कोचिंग सेशन. वो पटेल जी एक साइड में बैठा होगा, तब कोई सीनियर, तब लोग क्लाइमेट के साथ ऐसे मिलेंगे जो वो स्टार्ट दोपहर का 42 डिग्री सेल्सियस में भी करेगा, 5 डिग्री सेल्सियस में भी करेगा. तब इन लोगों ने कोई नेशनल्स के लिए जाएगा, लोग और हाई क्लाइमेट के साथ मिलता जुलता रहते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर एट एनी टाइम दे आर रेडी टू प्ले. अभी केरला टीम है जो सब भी नॉर्थ में आ जाता है. नॉर्थ में आने के टाइम उन लोग क्या बोल देते, हमारे को सर्दी का टाइम उन लोग बोल देंगे हमको धूप में डाल दो, कम 11 बजे डाल दो, 12 बजे डाल दो. लेकिन ये पटेल जी नहीं तो छत्तीसगढ़ टीम कभी नहीं बोलते हमको इसी टाइम में हमारे का मैच डाल दो.
12 बजे मेरे बच्चे डाल दो, क्यों? वो क्लाइमेट कोई भी टाइम में खेलने के लिए उन लोग तैयार है। तो पहले बात है। सेकंड बात, उन लोगों ने क्या कर देता है, जो कोचिंग सेक्शन है वो मैम बोला 4 बजे से रात को 6-7 बजे तक स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। तब ऐसा ट्रेनिंग है, लोग हार्ड ट्रेनिंग हो जाता है, जैसे आर्मी ट्रेनिंग है। तब उन लोगों को हार्ड ट्रेनिंग ऐसा कर दे तो वो, इसलिए कोई धूप का कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ देता है। और दूसरा, इन लोगों का खाना है, ये खाना वो ऐसा टेस्टी फूड नहीं खाता जैसे आर्मी वाला में कोई भी फूड वो खा जाता है, तब इन लोग जाकर कोई नेशनल्स के लिए जाएगा, इसे इन लोगों को कोई खाना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ जाता है कभी भी। वो कोई भी टाइप का नहीं, तो साउथ का टीम जाकर मैच खेलने के लिए जाएगा, उधर का खाना इन लोगों को सूट नहीं बनता, इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और डूरिंग द गेम में वो राजेश पटेल जी ने क्या कर देता है, जैसे उसको जाकर खाना खाने के लिए उन लोग का अलग काउंटर बना कर रखा, कोच को अलग, वो उधर कभी उन लोगों के साथ जाकर हमारे साथ आकर बांटकर खाना नहीं खाएगा। इन लोगों ने प्लेयर्स ने पूरा 12 प्लेयर्स को इकट्ठा बैठेगा, उसके बीच में वो खाना खाने के लिए बैठेगा। तब इन लोग प्लेयर्स के साथ ऐसा मिलता रहता है, इसलिए इन लोगों का परफॉर्म, इन लोगों ने एक डे टू डे लाइफ में इन लोगों ने छत्तीसगढ़ वाला ने वो इन लोगों का पूरा जैसा कोचिंग सिस्टम बनाया है, इसलिए इन्होंने 20-25 साल में इन लोगों को जैसे इन लोगों का सुप्रीम पावर बना कर रखा है। इन लोग मेरे ख्याल में 100 आदमी, तकरीबन 100 मेंबर्स इंडिया का रिप्रेजेंट किया है, और मेरे ख्याल में 100 मोर देन 100 नेशनल टाइटल्स उन्होंने हासिल किया है, और क्या बहुत अवार्ड वगैरह बहुत कुछ उन्होंने यह किया है। तब नेक्स्ट बात, आई एम टॉकिंग अबाउट ये एक साइकोलॉजिकल एक मूव है विच हमारे को हेल्प किया है, जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, मैं आपको एक कहानी बोलकर मैं ये समाप्त कर दूंगा। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट का रोल मैं आपको बोल दूंगा। जो हमारा कालिकट यूनिवर्सिटी है, वो पिछले 3 साल में हम कंटिन्यूस जीता है। उसमें एक साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ अटैच किया था, जो हम ट्रेनिंग कैंप में, वो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, हर आदमी का डिटेल्स, मदर क्या करता है, फादर क्या कर देता है, ये सब कुछ इन लोगों को पूछते रहता है। तब वो गेम खेलने के लिए जाएगा, वो इन लोगों को ट्रेन में ऐसे इन लोगों को मेंटली बूस्ट कर देगा। जब अभी गेम के लिए जाएगा मैं, वो क्या करता है, गेम स्टार्ट करने से बोले पेप टॉक में, जैसे हम फाइनल खेला था, फाइनल में उसने क्या किया, जो पहले इसको पता है फाइनल में हम खेलने के लिए जा रहे हैं, जब वो एक पर्टिकुलर एक गर्ल है, उसका घर में क्या होता है, बहुत गरीब घर की है, उसका मदर पिछले 18 साल से नौकरी कर रहा है, उसको मतलब तो दूसरा घर में जाकर साफ सफाई कर देते रहते हैं। तब गेम में अंदर जाने के लिए, ग्राउंड में जाने से पहले उसने सबको बुला लिया, देखो ये हमारा ये लड़की है, जो एक पर्टिकुलर लड़की है, वो उसका मदर 25 साल से वो काम कर रहा है कोई बिना रस्ट में। तब हमारे को एक ही मदद से हम पूरा 12 प्लेयर सोचने से इसका लाइफस्टाइल हम बदल कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना, उसके लिए इसका मदर को थोड़ा रेस्ट करने के लिए ये ट्रॉफी हम जीतना चाहिए। ये ट्रॉफी जीतने से हमारा वो पर्टिकुलर गर्ल्स को नौकरी मिलेगा, उसका फैमिली का सेटअप अलग हो जाएगा। तब हम खेलने स्टार्ट हो गया, फाइनल खेलना, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी। सो लास्ट 3 मिनट में वी आर ट्रेलिंग बाई 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट से हम तो पीछे था। तब हमारा पूरा 5 प्लेयर्स 4 फाउल कंप्लीट किया है। तब हमारे को कोई प्रेशर वगैरह नहीं दे सकते। तब लास्ट 3 मिनट्स है, उसमें मैंने एक टाइम आउट लेने से पहले हमारा साइकोलॉजिस्ट को बोला है, हम टाइम आउट लेने के लिए जा रहे हैं, आप मैम 30 सेकंड्स ले लेंगे, कि टाइम आउट 1 मिनट का होता है, मैम 30 सेकंड्स ले लेंगे, आप 30 सेकंड्स आप ले लेना, और 3 मिनट्स लेफ्ट। तब टाइम आउट ले लिया, पूरा आ गया। मैंने जो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स बोला, लोग जो हमारे को तो डू और डाई, अभी हम तो हारने के लिए जा रहे हैं, इसलिए एक ही तरीके है, अपना मैक्सिमम शूट कर देना। उसके बाद मैंने टीम को, उसको साइकोलॉजिस्ट को हैंड ओवर कर दिया। तो 6 पॉइंट में हम ट्रेल कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट ने सबको बुला लिया। सबको बोलने के बाद अभी आपको मैं बोला है, जो मिन्नू मतलब वो प्लेयर का मदर बहुत ऐसा प्रॉब्लम है, ये 3 मिनट्स यू प्ले फॉर
मिन्नू फैमिली, यू प्ले फॉर मिन्नू's मदर, ऐसा अब सब आदमी उसके लिए जय बोल दो, ग्राउंड में जाओ, ऐसा बोल दिया। ऐसा इन्होंने साइकोलॉजिकल इन लोगों को प्रेशर दे दिया, साइकोलॉजिकल ट्रीट किया, साइकोलॉजिकल अप्रोच किया। वी वन दी दैट मैच बाय 1 पॉइंट, हम एक ही पॉइंट से हमने वो मैच जीता है। सो रियली साइकोलॉजी इज प्लेइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल। मेरे को क्या क्या अचीवमेंट्स मिला है, वो साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ, हम आजकल केरला में एक साइकोलॉजिस्ट को टीम के साथ अटैच कर देता है, इवन यूनिवर्सिटी में भी अटैच कर देता है। जो हमने जो जितना मैच जीता है वो दैट इज अप टू साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी को आगे के लिए एडवांस गेम के लिए बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैम बोल रहे थे मैं साइकोलॉजिस्ट उसको हर टाइम के मॉडर्न गेम में साइकोलॉजी के साथ अपने रखना है। और मैं बहुत आभारी हूँ जो आई एम वेरी हाईली इंडिपेंडेंट टू संत थॉमस कॉलेज छत्तीसगढ़। अब मेरे को इतना टाइम मिल गया, मैं बोला आपको ऑलरेडी बोला यह पूरा सराउंडिंग में पुलिस वाला घूम रहे, इसलिए आप मेरे को मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम हाईली इंडिपेंडेंट टू यू ऑल फॉर मेरे को इतना टाइम मिल गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, थैंक यू। Anthony, sir, Hello. for very Hello. Thank you, Anthony, sir, for very authentic words we heard from you. Being a coach of international repute, your vast experience showed in your talk. Thank you very much, sir. Now I hand over the mic to Mr. Mahendra to introduce Dr. Krishnakant Sahoo from Gwalior. Thanks a lot, madam. It's my pleasure to introduce our next speaker of today's webinar, Dr. Krishnakant Sahoo. Sir is presently working as professor and head of the department, Sports Management and Coaching at Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. He has also worked as Associate Professor, Assistant Director, and Assistant Professor at Amity School of Physical Education and Sports Sciences. From October 2005 to December 2015. He is specialized in sports management, sports biomechanics, and football. Sir has successfully guided 4 PhD scholars, 15 MPhil scholars, and MPhil students in their dissertation thesis. Sir has also published 8 books and research papers in various international and national journals. He has also presented research papers at various national and international conferences, seminars, and workshops. So without wasting much time, now I invite Sir to speak. Please, Sir, Dr. Krishnakant Sahoo. मेघा, Hello. Hello, Dr. Krishnakant, are you there? यार क्या हो रहा है यार? Dr. Krishnakant, can you hear me? Mahesh sir, maybe due to internet issue, I think Krishnakant Sahu sir internet is not working, so he won't be able to deliver the speech, I guess. So, Smita ma'am, Yes, can you I'm ready, sir. invite the next? Yes. I request Mr. Mahendra to introduce our next speaker, a player, a coach, and an actress, Miss Kimi, as she is known to all her friends.
Thank you, madam. Now I'm pleased to introduce our next speaker and international hockey player, Miss Lalmin Kimi Kyungtae. She has done BA and BPA. Also, she took diploma in. Hello, Sumita madam, is my voice is clear? Yes, sir, continue, sir. Hello. Sir, please continue. You're audible. Sir, just a minute. Okay. So she has done BA and BPA. Also, she took diploma in hockey from NIS Patiala. She has played national level tournaments and sub-junior and junior level. Madam has represented at senior national level also. She has been selected for international tournament for under-19 Asian Hockey Championship. Madam basically belongs to Ajwal from Mizoram State. I'm feeling very proud to tell you that Madam has worked as an actress in the famous Bollywood movie Chak De India in the year 2007. So without taking much time, Madam, I invite you to please share your experience and thoughts with us. Please, ma'am. Lalmin Kimi, ma'am. Okay. Good morning, everyone. I would like to thank the management of St. Thomas College giving this opportunity to share myself as a player and as a coach. I used to play with the boys every evening as long as I can remember. Football. I used to play football. I think it was since when I was in nursery because girls play sometimes and the boys used to play regularly every day. At the age of 10, I play at the local girls football hockey tournament. One of the hockey coach who was a chief guest for the final football tournament observed that my skills were very different. She observed that I had stamina and speed and unique technique while playing the games. After the tournament was over, she came and asked me, "Do you want to play hockey?" I do not know what is hockey. Still, I say, yes. Then she said, I will give you a training. You can join Monday morning onwards. I could not sleep Sunday night. I got up and was ready by 1 o'clock in the morning. I reached the training camp with two of my friends at 3 o'clock in the morning. It was dark and around 4 to 5 kilometers in the mountains. Could you imagine? You walk all that 5 kilometers, flashing the torch light. When the first light of the morning came over the mountains, we were given one wooden hockey sticks and one hockey leather ball. It was wow. It was the first time I had seen a hockey stick and hockey leather ball, and I was holding to it as my dear life. And that morning fixed that what I wanted to be. I took care of it very carefully. For the first 1 week, I used to walk those 5 kilometers in the mountains early in the morning to the training ground. After which they admitted me to the academy. My official training began. Miss Larampari, Miss Maveni, then the Mizoram hockey coach, and Miss Lalmin Kimi, President Hockey Mizoram, mentored me to my success, and my father supported me since that day onwards. Because of better performance and lack of astroturf ground in Mizoram, during those days, the Mizoram Hockey Association sent me to Sport Authority of India, SAI, in Gujarat, Gandhinagar in 2000. It was 13 years old. I was 13 years old. The first things I faced was language. I did not understand Hindi.
it was only yes or no. That means how or not. That's it. And every little English. To add to my misery, the temperature was 45 degrees Celsius. Food I could not eat, could not mingle with others in the academy due to culture differences. Sometimes we got into fight, like group fights between states. Because all these new things happening around me, I had a hard time adjusting and my performance came down. It took me 3 to 4 months of struggling to bring my performance back. When I was studying at Patiala in 2007 for becoming a hockey coach, 7 years later, I realized what I had faced in those previous years of my struggling outside Mizoram. Now, we shall see what the player faced psychologically in his or her life. Some point, you will be able to see it on the screen. I want to present in the screen, please. Can you put? Michael, sir? Negative. Okay, go ahead. Never give up. Never give up. Negative, eternal or internal factors can lead to mental blocks. Okay. Causing break in focus and preparation. Poor performance and at time injuring themselves. They can produce physical disruption such as muscle tightening, shaking, and increasing perspiration. I have seen among professional players, many suffer from a mental health crisis, which may show as stress, eating disorder, burnout, and depression and anxiety. One of the most common saying in sport is that 90% of performing is mental. The problem is 90% is that 90% of coaches and players spend 100% of their working of the physical and fundamental aspect related to their sports. Making mentals. I faced all those things when I was in Gujarat. When the body and mind react to danger and threat, a person feels physical sensation of anxiety. Anxiety is a negative emotion and affects our thought about competition, where a large majority of athletes consider anxiety to be bad and may result in decreases in performance. When in the tournament is very common, we start asking ourselves, what will happen? What I will be able to perform well or not? Will I be able to perform well or not? One of the very dangerous things is overconfidence, especially when you know you are good and others look up to you. You should never underestimate our opponents. This thing happening to me so many times. When I have overconfidence, my performance automatically came down. Then during the games, I realized that I should not
overconfidence, then I can get back. Then let's go ahead. I feel sports psychology is very important for players as it uses mental skill training to help players develop mental toughness. Efficacious counseling and psychological help is given to all sport persons. Many will gain from it. Their games and performance on field will improve. Mental skill training involves assessing athletes' area of strength and weaknesses, and devising a program that builds key areas essential to their sports and their individual needs. Psychological skill or mental skill are tools for the mind. These include skills like positive self-talk, enhancing confidence, goal setting, and achieving the most productive mindset, among many other skills. Improving your psychological skill can enhance academic performance and your overall well-being. Every player should also go through this training. We as coaches try as much as we can to be a mentor to the players. Definitely, a trained sport psychologist can do a professional job. Now, when as a player we don't win a match or we get injured, there is a normal emotion reactions that includes processing the medical information about the injury provided by the medical team, as well as coping emotionally with the injury and the defeat. These emotional responses include sadness, isolation, irritation, lack of motivation, anger, frustration, change in appetite, sleep disturbance. Because we are sitting down, not doing nothing, so our brain start playing games. As it wants to have some entertainment, we got plenty time for it. There has been many injury, but the one that affected me very much was when we were practice for under 19 Asia Hockey Championship in 2005. When a ball came right flying from 3 yard distance and hit my chest, I fell down and was admitted to the ICU. I could not go with the team to Gifu, Japan. In the month time when my teammates left for the tournament, I was still deemed unfit due to the injury. We have to return to pre-injury level of activity in more serious case. However, our playing career may be a danger, and mental health care provider should be prepared to address these issues. The team physician are ultimately responsible for the return to play decision, and addressing psychological issues is a significant component of this decision. Therefore, it would be more easy and helpful for a sport person to get back to form if a psychologist take care of the mental well-being. But when the opportunity came and in which everywhere it shows, you should identify it and take it. Okay, I just want to share you some how I'm selecting Check the India. These things I got so many questions. As per the request, I would like to share how I got selected into the Check Day India. Okay, and when we was in the Bhopal Indian game,
the team had come for audio from Yasraj film to Bhopal India game. They interviewed me and asked me some questions in front of the camera. And I was very normal with the replies. They did the same for the other players. I am the first one giving the interview, actually. They might not have found anyone else from the camp comfortable with the cameras and insisted me going to Mumbai for the making to the film. And I had been selected to the Indian team and I wanted to play for the Indian team. So I said, no, I couldn't come to Mumbai. I want to play for Indian team. Then they says, okay. Then after that, due to a bomb blast in Pakistan, the tournament was postponed. They sent us home for a time being. And during that time, then because of my injury, I was admitted in the hospital again. Then after 1 month, and then the next year, they call again for the game again. And during that time, I was in the hospitals. I couldn't attend the Indian game again during that time. Then the venue was changed to Japan. They knew that the films knew that industry knew that I was hospitalized. Then they called me every day, insisting on me to join Yasraj film. They never give up, and so after 1 month, I finally yielded. Then this is how I enroll into the Chakde India. Then I want to tell you all successful sport person to do the following things, and if necessary, seek psychological help. Number 1, choose and maintain a positive attitude. Number 2, maintain a high level of self-motivation. Number 3, set high, realistic goals. Number 4, deal effectively with people. Number 5, use positive self-talks. Number 6, use positive mental image and thoughts. Number 7, manage anxiety effectively. Number 8, manage their emotion effectively. As a trainer and a coach, you should know the psychology of your players and your children. This is the secret of being a good coach. And keep God first. Always keep God first. And thank you. Thank you so much for your time. Thank you, Kimi. It is rarely that we got to hear a sports person who had actually played and also acted her playing in a film. I'm sure the same emotion you felt while playing in the match must have felt being by you when you acted as a player. Thank you for telling us about your life and experiences. Now I request Mahendra sir to introduce our next speaker, a player of repute, Mr. Dinesh Kumar Mishra. Thanks a lot, ma'am. Now I'm introducing the next speaker of today's webinar, an international basketball player, Mr. Dinesh Kumar Mishra. He is currently working as business associate in Bank of Baroda, Bangalore. I'm feeling very proud to tell you that Mr. Dinesh has been awarded by IMG Reliance Scholarship, United States of America from 2011 to 2015. He participated in
35th National Games at Kerala in 2015. Also, he participated in 4 national championships and 5 state championships. He has also participated in 2 junior national camps and 1 senior national camp. At international level, Mr. Dinesh participated in UBA in 2 seasons, and he was in the UBA team of Chennai and Pune. So, with this extraordinary sports career, now I invite Mr. Dinesh to share his thoughts. Mr. Dinesh Kumar Mishra. Thank you, sir, for inviting me to share my experience on mental health of a sports person. As you know, sports person is a warrior, according to me. क्योंकि जितना फाइट एक स्पोर्ट्स पर्सन करता है उतना नॉर्मल पीपल्स नहीं करते हैं. So I will start with my journey where I start. जगदलपुर, my hometown. वहां से मैंने खेलना चालू किया. लाइक स्कूल टीम को रिप्रेजेंट करना. फिर एक्चुअली स्टार्टिंग मैंने इतना सीरियस तरीके से स्पोर्ट्स को नहीं लिया था कि हम जिस फैमिली से जिस टाउन से बिलोंग करते हैं, इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स को उतना प्रिफर नहीं किया जाता है. पेरेंट्स विल से यार तुम स्पोर्ट्स में क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारा कैरियर वेस्ट है. तो फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा तो मेरा लाइफ में क्या आएगा. व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मेरे स्पोर्ट्स में जाने से क्या फायदा लगे, हाउ आई कैन सपोर्ट माय फैमिली एंड हाउ आई कैन मेक माय कैरियर. सो आई स्टार्ट फ्रॉम द जगदलपुर, माय होम टाउन, है ना. वहाँ स्कूल्स टीम्स विमल स्कूल्स है, वहाँ से मैंने पार्टिसिपेट किया था जस्ट फॉर फन स्पोर्ट्स. फिर मैंने आगे जब उसको खेलने, आई गॉट सेलेक्टेड ऑन कैंप्स ऑफ इंटर स्कूल स्टेट चैंपियनशिप. तो वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया. मैंने देखा चलो ठीक है, इट्स अ गुड न्यू थिंग, चलो देखा जाएगा कि वहाँ कैसे प्लेयर्स आते हैं, किस हाई लेवल मेंटेनेंस लाइक मेंटालिटी रहता है प्लेयर्स का. तो मैंने स्कूल्स खेला वहाँ पर. तो मैंने देखा यार कि वाओ, इस लेवल्स का गेम होता है कि जो लेवल जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं. इस स्टेट चैंपियनशिप तो डिफरेंट सिटीज के प्लेयर्स आए थे जो डिफरेंट मेंटालिटी बोलते हैं उसके आए थे. तो आई वाज सो लाइक एक्साइटेड कि मुझे और जानना है. क्यूरियोसिटी आ गई थी मेरे अंदर कि मुझे और जानना है और उसको मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ, अपने अंदर कैसे ला सकता हूँ. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड टू बीइंग गिवन मोर टाइम ऑन स्पोर्ट्स. तो मैंने ज्वाइन किया भिलाई स्टील प्लांट क्लब, भिलाई में है, जो आई वाज ट्रेन अंडर लाइक 6-7 years इन इंटरनेशनल कोच RS गौर कोच के अंदर मैंने काम किया. एंड ऑल्सो सराउंडेड विद अ ग्रेट इंडियन बेस्ट ग्रेटेस्ट प्लेयर अराउंड मी. उनके अंदर रहना खेलना. आई वाज लकी कि I was lucky that I selected basketball because I found so like good human players, like human beings and coaches that मुझे हर एक चीज में support किए. But still like I belong to a small town, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला. I was blind. तो भी मैंने रिस्क लिया कि चलो देखा जाएगा आगे. So I came to Bhilai, start playing, giving more time to sports basketball. But I got lucky that I got selected in a national camp, national camps. Then I played in international level tournament. Then I got lucky that I got selected on the Indian camps. Then from there, I don't know, like I got selected for an international like IMG Reliance scholarship. That's like a big dream for me. I never thought कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा. क्योंकि एक small town का लड़का कैसे सोच सकता है कि यार उसको ये सब मिलेगा. But step by step, I got like, I don't know why, it's a God grace or lucky that I got everything in correct time. Then I attend like that camp. I given the tryouts for the IMG Reliance that conducted by Mr. Ambani. I went to US. In US, I was there for 5 years. In 5 years, when I went there, like we are Indian mentality players. Like our sports is totally different. Playing styles, how we take care sports, and there. So it's in another level. So for me, the challenge was how I can take like competition, how I can compare them with my skills. So starting मैंने वहाँ का language, cultures, food, everything अब मुझे pick up करना पड़ा क्योंकि हम इंडिया से बाहर मैंने कभी गया नहीं था, right? तो वहाँ पर total players जो थे from part of the world, different part of the world, like हर जगह से players आए थे. उनका रहना खाना खेलने का तरीका
मेन जो स्पोर्ट्स है, खेलने तरीका। सो आई वाज सो प्रेशराइज्ड कि हम कैसे इसको पिकअप करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आए इंडियन कम्युनिटी से, हमारा जो कंफर्ट जोन है इंडिया, हम वहाँ खेले, लोगों के बीच में खेले, वहां पर शॉट्स मारे, अचीवमेंट्स लाए, सब अपने कंफर्ट जोन में था। हाउ अब उसको कंफर्ट जोन को तोड़ के हम कुछ अचीव करें, कुछ सीखें, और तो इट वाज अ बिगर प्रेशर फॉर मी कि हम कैसे उसी चीज को पिक कर सकते हैं वहां से। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग पीपल्स, है ना, वहाँ का जो रहन सहन, जो खेलने का तरीका जो बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, सब चीज पिक किया। बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट मेट विद इंजरी, नी इंजरी, बिकॉज वहाँ पे गेम स्किल्स, एनबीए बोला जाता है, एनबीए मतलब वर्ल्ड का बेस्ट गेम्स होते हैं यूएसए पे, और उनका गेम स्टाइल्स हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा गेम स्टाइल टोटल डिफरेंट है। वी डिपेंड ऑन स्किल्स, बट दे डिपेंड ऑन स्किल प्लस स्ट्रेंथ, कि कैसे हम स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं, स्किल्स को कंबाइन करके एक परफेक्ट गेम प्ले निकालते हैं। तो वहां पर मैंने क्लासेस लिए, इंजरी हुआ मुझे, तो इंजरी के बाद मैंने ये सीखा कि हम कैसे अपने आप को ऊपर ला सकते हैं सब चीज से। क्योंकि अगर इंडिया में इंजरी होता तो इट्स इंडियन मेंटालिटी एक्चुअली, इंजरी होने के बाद लोग क्या बोलना चालू करेंगे कि यार तुम्हारा इंजरी हो गया है, यू कांट प्ले एनी मोर, लाइक योर लाइफ इज डन, आप आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि हर एक स्टेप में ऐसे पीपल मिलेंगे जो आपको डेमोलाइज करेंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे। दैट टाइम हम क्या सोचते हैं ये डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, मेरे अंडर ही कितने सारे प्लेयर्स है जो इंजरी होने के बाद खेलना छोड़ दिए, क्योंकि उनको बोला गया, ऐसा बोला गया कि सराउंडेड ऐसे पीपल्स थे कि उनको बोला गया कि नहीं यार तुम नहीं खेल पाओगे, तुम्हें इंजरी हो गया, लाइफ कैरियर खत्म हो गया, तुम क्या करोगे आगे, कुछ कर नहीं पाओगे, दिस इज नॉट राइट। तो मुझे भी ये सब बोला गया जब मैं यूएस में इंजरी में था, तो मैंने क्या बोला, नहीं यार, आई हैव टू कम थ्रू ऑल दिस थिंग, क्योंकि अगर कुछ प्रूफ करना है तो अपने आप को सेल्फ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। अपना मेंटालिटी कैसा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ यू थिंक, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम करेंगे। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव, नहीं, आई हैव टू come up, I have to show some people that I am good, I can do some much better things. तो मैंने स्टार्ट किया लाइक डिसिप्लिन, सर ने जैसे अनिल सर ने बताया कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, सेम थिंग आई स्टार्ट विद द डिसिप्लिन, कि मैं एवरी डे, एवरी सिंगल डे की मॉर्निंग उठ के वर्कआउट करना है, अपना जो रिहेबिलिटेशन होता है नहीं कर रिहेबिलिटेशन करना, क्लासेस अटेंड करना, फिर ओवरऑल एवरीथिंग। आई आल्सो स्टार्टेड वाचिंग गेम्स ऑफ माय टीम, दैट उन लोग क्या कर रहे हैं गेम में, क्योंकि इंजरी के बाद आप 6-7 मंथ्स आप बैठेंगे, है ना, आप रिहैब करेंगे, आपको और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे आपके अंदर कि यार नहीं, अरे यार मैंने इंजरी हो गया, मैं बैठा हुआ हूँ, आई कांट डू एनीथिंग, माय फ्रेंड्स एंड माय टीम्स आर गेटिंग अप, दे आर गेटिंग अचीवमेंट्स, दे आर डेवलपिंग देयर स्किल्स। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। According to me, you can learn from outside also. So same thing I started watching games, their practice every single day. I go there for 1 hour, I sit there, I watch there what they are doing, कि उन्हें क्या ऐसा कर रहे हैं। So I analyze everything in my mind कि नहीं यार that thing. So मोटो ये था कि जब मैं खेलना चालू करूंगा, after 8 months when I step in a court, I can compare them as like can compare their skills, लाइक कि ऐसा ना हो जाए कि यार उन लोग मेरे से आगे निकल गए, मैं पीछे हूँ, और दे विल ट्रीट मी एज लाइक यार ही जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग, लेट्स गिव अ चांस। ऑलरेडी मैंने 8 मंथ्स बैठा है, चेक किया कि यार बैठ के रिकवरी क्या है ना, और टाइम वेस्ट करना इज ए टोटल वेस्ट ऑफ टाइम ऑन दैट लेवल, एट दैट लेवल, कि मैंने कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। मैंने ये सोचा, आई स्टार्टेड एवरी सिंगल डे कि ऑन टाइम, कि मॉर्निंग जाना है, करना है, फिर वर्कआउट करना है, फिर गेम ऑफिस करना है। देन आई रिकवर्ड, देन आई केम बैक टू इंडिया, देन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, प्रो लीग, द यूबीए प्रो लीग जैसा नहीं होता है, प्रो लीग्स, यूबीए प्रो लीग्स एंड ऑल। नाउ आई एम वर्किंग ऑन द बैंक ऑफ बड़ौदा। सो दिस इज माय लाइक अ लाइफ स्केच, लाइक कि मैंने ये सब किया है, बट इसके पीछे मैंने क्या क्या किया है ये सब पाने के लिए, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि इसके साथ हम एवरी डे शेड्यूल एक चीज फॉलो नहीं कर सकते, इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि आपका माइंड ऐसा चीज है ना कि आप कुछ करेंगे तो आपको बोलेगा कि नहीं यार तुम कल तो किए थे, आज क्यों कर रहे हो। लाइक आई विल गिव एग्जांपल, लाइक वर्कआउट्स, आप एवरी डे वर्कआउट्स कर रहे हैं, हर रोज एक चीज कर रहे हैं कि यार हमको बिल्डअप होना है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे कि नहीं यार मैंने कल तो किया था, आज क्यों करो, आज रेस्ट लेता हूँ। अपन डाइट मेंटेन करते हैं कि नहीं यार चलो आज मैं कुछ बाहर का स्नैक्स खा लेता हूँ, है ना, कुछ चिट्टे बना लेता हूँ, कुछ और खा लेता हूँ। नहीं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज मस्ट इम्पोर्टेंट, कि तुम कैसे अपने आप को कुछ केव में डालते हो कि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है,
I always see myself in a big screen. मैं अपने आप को हमेशा बड़ा स्क्रीन में देखा कि I want to be a greatest player of India. Even though if I go international, I have to be a best on them. So I always saw myself in like a big screen. So I started doing things. मैंने अपने आप को excuse कभी नहीं दिया कि नहीं यार नहीं करना. I was there on time. If coach say morning 4 o'clock you have to be in ground, I was there to do workouts and do everything. That makes sense difference. तो मेंटल हेल्थ इसी को बोलते हैं कि हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. हाउ वी प्रिपेयर आवर सेल्फ टू फेस द गेम, फेस पीपल्स, राइट. सो फाइट, एक्चुअली स्पोर्ट्समैन का लाइफ एक फाइटिंग होता है, फाइटिंग होता है हर चीज से, फैमिली से, नेबर से, अपने टीममेट से, कि हमको no one will going to support you, no one will ever going to support you on sports field. You have to be your own, self motivate रहना ही पड़ेगा, खुद को अपने आप को पॉजिटिव थिंग्स बोलना पड़ेगा. इवन दो यू आर डाउन फॉल, यू हैव टू थिंक लाइक नो यार दिस इज हैपन टू मी, नो आई हैव टू डू समथिंग एल्स दैट मेक्स मी फील हैप्पी और मेक्स मी फील कंफर्टेबल. मेंटली स्ट्रांग रहना, मेंटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ इन स्पोर्ट्स कैरियर, राइट. जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपीरियंस इसी से आता है कि हम कैसे, अब बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस प्लेयर था, नो इट्स नॉट एक्सपीरियंस, मेंटली स्ट्रांग रहता है. वही चीज हम कैसे सोचते हैं, कैसे अपना को रिलैक्स रखते हैं, अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, कैसे पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लाते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट. अगर आप देखिए गेम खेलने जा रहे हैं, एग्जांपल देना चाहिए कि आप गेम खेलने जा रहे हैं, राइट. अब गेम है ना, 30 मिनट्स आपको वार्म अप मिला है स्टार्टिंग, 30 मिनट्स में आप कैसे रखेंगे, पहले आप सोचेंगे कि यार मतलब कि मैं कैसे करूंगा, यू आर अफ्रेड, यू आर टेंस, यू आर नर्वस, यू आर प्रेशराइज्ड. तो आपका गेम टोटली डिफरेंट रहेगा, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपके पैर भारी हो जाएंगे, आप भाग नहीं पाएंगे. इन एवरी स्पोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बास्केटबॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी single sports that you guys are participating or you want to play. Starting is the ending. If I say, जो starting रहता है आपका, वही आपका end decide करता है. Like starting, जैसे कि आप अभी प्रेशर सेंगे तो आपका गेम अलग रहेगा, लेकिन अगर वही चीज आप सोचेंगे नो यार आई एम गुड, आई कैन डू मच बेटर, आई एम द बेस्ट प्लेयर in this tournament, in this game, I can do much better things. पॉजिटिव वाइब्स लेंगे, अपना गाना सुनेंगे, अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करेंगे. That will be that will makes you a different player than normal player. आप एक नॉर्मल प्लेयर रहेगा ना कि हर गेम, देखो लाखों करोड़ों प्लेयर्स है जो खेलते हैं, लेकिन आपको अलग उठ के आना है. तो आप अलग कैसे उठ सकते हैं, पॉजिटिव थिंग्स रखना, टाइम पे सब चीज करना, रूटीन फॉलो करना, डिसिप्लिन. जैसे एंथनी सर ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्लेयर्स ये सब करते हैं, राइट. क्यों करते हैं, ये तो गुड थिंग्स है सर ने, ऐसा कोच बताया, बट एज अ प्लेयर व्हाट विल से, प्लेयर्स का मेंटालिटी क्या होता है, प्लेयर्स, कोच बोला 4 o'clock आना है मतलब 4 o'clock आना है, राइट. बट प्लेयर्स का बॉडी भी होता है, बॉडी यार बोलता है कि नहीं यार नहीं जाना, बट द प्लेयर्स आर देयर, दे आर थिंकिंग नहीं यार हमको जाना है, कुछ करना है, अचीवमेंट लाना है, अपने फैमिली को देखना है. क्योंकि ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई थिंक 80-90% ऑफ प्लेयर्स जो छत्तीसगढ़ से खेलते हैं, दे आर वेरी पुअर, बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, है ना. दे कांट अफोर्ड थिंग्स. स्पोर्ट्समैन की लाइफ को भी मेंटेन करना के लिए पैसे रखते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो हमको कैसे टेक केयर करना है, कैसे अपना बॉडी को, अपना लाइफस्टाइल को, अपने कैसे स्पोर्ट्स को टेक केयर करना, ये हमारे ऊपर रहता है. नो वन कम्स टू टॉक टू यू और दे विल प्रोवाइड यू एनीथिंग. मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन. आप फिजिकल एक्सरसाइज तो रोज करते हैं, रोज, एवरी डे यू विल बी ऑन टाइम, बट व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ? वी डोंट डू एनीथिंग फॉर मेंटल हेल्थ. क्यों? मेंटल हेल्थ तो उतना ही इंपॉर्टेंट है. जैसा आप सोचेंगे वैसा करेंगे. कभी आप सोचेंगे कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, यू विल फील द एयर. अब हवा पड़ेगा आपको ना, आपको इतना अच्छा फील होगा कि इट्स लाइक बेस्ट डे. बट सम डे इट विल बी लाइक, आप सोचेंगे कि यार बेकार जा रहा है, यू विल बी नॉट इन मूड, यू विल गेट इरिटेटेड फॉर गुड थिंग्स आल्सो. तो आपका दिन पूरा बर्बाद जाएगा. सेम थिंग, इट्स ऑल मेंटल. हम कैसा सोचते हैं, everything is depend on thoughts on your mind, like what you think, what you do. तो मैं आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि जितना फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उतना मेंटल हेल्थ भी जरूरी होता है. हम फिजिकल हेल्थ के लिए हम रोज वर्कआउट्स करते हैं, मतलब एवरी डे ऑन टाइम हम वर्कआउट्स करते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, डाइट लेते हैं,
बट मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते मेंटल हेल्थ के, हम ऐसे ही चल देते हैं, गेम्स के लिए चले जाते हैं. व्हाट प्रिपरेशन वी डू नथिंग. We should start doing mental preparation because it will change your life. It will change your game, it will change your life, it will change your like looking people's like how you watch people's. It will change the views also. We should start doing this. जैसे कि मैंने एक और चीज था, मैंने बताना बोला कि मैंने 10 डे सेशन लिया था इंडिया पे बॉडी मूवमेंट थेरेपी करके. इसमें भी आपको यही बताया है कि आप कैसे अपने आप को ओवरकम ला सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबल वे ऑफ एवरी सिंगल थिंग. नो वन इज गोइंग टू come and talk to you, yeah, what happened, why you not perform, what you doing this. No, you have to take care by yourself, according to me. So पॉजिटिव रखना ही सही नहीं होता, उसका प्रिपरेशन भी होना है कि हम कैसे अपने आप को बात करते हैं, हम कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं. सिर्फ बॉडी फिजिकल मेंटेन करना इज नॉट इनफ. फिजिकल के साथ अपना मेंटल प्रिपरेशन भी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे हिसाब से हम डेली जो वर्कआउट करते हैं एवरी डे जिमिंग, उसके साथ एक 30 मिनट्स का मेंटल प्रिपरेशन रखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, और हमको रखना चाहिए क्योंकि हम परफॉर्मेंस तभी आएगा जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे. राइट. सिर्फ वर्कआउट करने से आप जा रहे हैं, सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, स्पोर्ट्स शूटिंग कर रहे हैं, बास्केटबॉल है तो, या गोल मार रहे हैं, फुटबॉल है तो, इट्स नॉट इनफ. पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स आल्सो भी it's like very important role in life, right, in sports career. So thank you so much guys for listening me and giving me this opportunity to share my experience. This was my thoughts and my life journey that I shared with you guys. Thank you so much. Dinesh, I would like to ask you a question. Yeah, ma'am. Now, as you said that you have been for 4-5 years, you have played in the US, then you have been playing in India, and you have seen the mental health practitioners or sports psychologists work in India. As you just said that you have attended a 10-day session, Yes, and ma'am. you've had injuries, as I know, 2 injuries in America. So Yes. tell me something very particular, only related with the psychologist's role that you experienced in both the countries. उसके ऊपर 2 मिनट थोड़ा बताइए हमको. Yeah, sure, मैम. जैसे कि मैं बता, यूएस में मैंने जब इंजरी हुआ मेरे को मैम, तो वहां पर कोई नहीं था, ना फैमिली ना क्लोज फ्रेंड्स, जस्ट अ बंच ऑफ पीपल हु प्ले विथ मी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. मैम वहां पर मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे, मेंटल कंडीशनिंग क्लास, जो वहां पर एक्चुअली सारे स्टूडेंट्स को दिया जाता है वीक में वंस और ट्वाइस एवरी वीक, कि उनको प्रिपरेशन के लिए, कि वो गेम्स के पहले अपना कैसे प्रिपेयर कर सके. उसमें वीडियोस दिखाए जाते थे मैम. जैसे कि सबसे मोस्टली हमको वीडियोस दिखाया जाता था कि आर्मी पीपल्स कैसे वो डील करते हैं, उनको इतना टफ ट्रेनिंग दिया जाता है. आप वीडियोस देखिएगा उसको कि उनको हाथ पैर बांध के पानी में डाले जाता है, पूल में डाले जाता है, नहीं कि वो अपने मेंटली को बिल्ड कर सके. लेकिन वो सब तो हम करेंगे नहीं. तो उनको देख के हम क्या सीखते हैं कि हाउ टू बी टफ, हाउ टू ओवरकम विथ योर डाउनफॉल, कि आपको प्रॉब्लम चल रहा है आप उसके ऊपर कैसे आ सकते हैं. तो ये सब चीज सीखने को मिला. जैसे कि बताया कि मैंने वो सब चीज देखा सीखा, तो मैंने स्टार्ट किया कि वो अपने बॉडी में लाना, कि मैं एवरी मॉर्निंग उठ के अपना को बात करने लगा कि नहीं यार दिस इज योर गुड डे, यू शुड स्टेप अप. हम स्टेप अप करते, नो एक्सक्यूजेस, कि मैं अपने डेली टाइम पे अपना वर्कआउट रिहेबिलिटेशन करने लगा, फिर गेम्स वॉच करने लगा. क्योंकि दैट टाइम में मैम जब इंजरी होता है ना, तो हम सोचते हैं कि यार मेरा लाइफ खत्म हो गया, और से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. इट्स कॉमन, इट्स नेचुरल, कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको लगेगा कि नहीं यार लाइफ बर्बाद हो गई, आप कुछ नहीं कर पाएंगे. लेकिन दिस इज नॉट ट्रू. आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे. ये वहाँ का like the regime रहता था तुम लोग का, what the regime that you had. So this attending a session of mental health was part of the regime which every player had to go maybe once a week, or that was a part of the regime. It's a part of the system, ma'am, practice schedule, I will say. It was a part of the practice schedule. And this is something, do we have, and in India, do we have something like this? That no, ma'am, no. This is really like unfair to us Indian sports people, ma'am. We are very hard workers. Indian sports people, ma'am, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सही टेक्निक, सही गाइडलाइंस उनको नहीं मिलता. मैम जो भी अभी मैम जो अपने अचीव्स किए हैं, वो उनका सेल्फ मैम वर्क है, जो अपने खुद से सेल्फ एबिलिटी से उन लोग पहुंचे. अगर हमको सही गाइडेंस, सही टेक्नोलॉजी, मैम टेक्नोलॉजी, सेम एटीट्यूड से कोचेस,
कोचेस भी बहुत वंडरफुल है, लेकिन उनके पास भी उतना मैम थिंग्स नहीं रहता है कि प्लेयर्स को गाइड कर सकते। जैसे यूएस में मैम हमको टीवी रखा, टीवी के सामने शो मतलब प्रोजेक्ट किया जाता था कि ये तुम ये गेम्स प्ले, एवरी गेम के पहले हम आधा घंटा एटलीस्ट में अपना पुराना गेम देखते थे, सेम गेम्स हमने क्या मिस्टेक किया। ये प्रोवाइडिंग थिंग है, टेक्नोलॉजी हमको लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ऊपर से मेंटल हेल्थ कोचेस में इंडिया में हमारे पास नहीं है सर। वहां पर वीकली वंस की हर एक प्लेयर्स को मैंडेटरी था मैम कि वो जाए और अटेंड करें वहां पर कि वो क्लासेस कैसे होते हैं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सके गेम से पहले। मैम ऐसे कि एग्जाम्स लीजिए, स्टूडेंट्स अपने आप को पहले क्या रहता है, बहुत प्रेशर रहता है कि 5 मिनट पहले एग्जाम फिटनेस पहले भी पढ़ते रहता है, राइट, कि अरे यार नहीं कुछ छूटता नहीं क्या। इट्स नॉट राइट, वी हैव टू बिलीव इन अवर सेल्फ। If you believe, start believing ourselves, the greater thing will come in our life. सेम थिंग मैम इंडिया में भी जब मैंने ये बॉडी मूवमेंट थेरेपी बताया, मैंने 10 डे सेशन दिया था, उसमें भी सेम थिंग था मैम कि हम अपना वो बिलीव करना सिखाएं, कि हम बिलीव करें कि हर चीज अच्छा है, कुछ भी चीज नेगेटिव नहीं है लाइफ में। इवन दो वी आर गेटिंग नेगेटिव पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम पीपल, just ignore everything and think positive. That's the thing I learned from both India and US support. So ये जो वीकली जो सेशंस होते थे साइकोलॉजिकल वेलबींग का, ये हर वीक में कुछ अलग अलग मॉड्यूल्स करवाते होंगे वो लोग? यस मैम, वीक में अलग अलग रहता था मैम। इसमें मेंटल कंडीशन में ना हम टीम बिल्डिंग भी प्रोसेस रहता था, जो टीम को कैसे एक मतलब कि मैं बताया कि हर प्लेयर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का था, सो उसको टीम मतलब मैम यूनिटी, हम उसको कैसे यूनिट करें, तो ये सब बताया था कि हम कैसे एक साथ आ सकें, कैसे सबको माइंडसेट एक रहे। मतलब गेम जब खेलने जाते हैं, टीम खेलने जाती है तो एक माइंडसेट से जाती है, एक बॉडीज अलग रहती है लेकिन माइंडसेट तो एक ही रहता है कि हमको क्या करना क्या रहता है। तो ये सब यूनिटी के लिए था मैम, यही मैं मेंटल सोच किया, कोई किसी से कम ना समझे कि हम इंडिया के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का है, वो जर्मनी का है, जापान का है, जहाँ का है मैम, सब इक्वल है। क्योंकि मैम ये से ह्यूमन नेचर कि हम बोलते हैं वी आर फ्रॉम चाइना, यार यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर स्मॉल कंट्री, ये सब थॉट जनरली आता है कि यार वो हमसे नीचे है। ये सब थॉट्स को हटा के हम एक कैसे हो सके, इसके लिए सब का क्लासेस रहते थे मैम वहाँ पर। Actually, ये हमारे लिए it has been a very enlightening session, Dinesh, because you have experienced the best of both the worlds, especially in the field of mental health, and we are listening from a person who has actually experienced it. So, thank you for satisfying the query, Sumita madam. Thank you so much. Thank you, Dinesh. Thank you so much, ma'am. Thank you, Mr. Dinesh, for a wonderful sharing of experience. You have seen both the world, the Western and the Indian. Your description of the interventions done by sports psychologists in America is a learning process for us. We have to take the best of all and make the discipline of sports psychology popular and practically useful in the field of sports. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. We are at the end of today's webinar. I request Mr. Kailash Narayan Verma, Sports Officer of this college and known to all in this region, to propose the vote of thanks. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very respected Manager Bishop, very Reverend George Matthew Ramban, Principal Dr. N.G. Roman, resource person of today's webinar, Dean Academics, Dr. Vinita Thomas, convener of today's webinar, Dr. Devjani Mukherjee, my colleagues and all participants attending the webinar. It is my pleasure to propose the vote of thanks. As a sports officer of this college, I am happy that the topic of sports psychology and its importance was discussed today. The most important thing to a healthy body is a healthy mind. If we are able to keep the mind healthy, a person can tolerate any hardship or defeat in a game. Mr. P.C. Anthony gave his point of view on the subject as a coach. I thank you, sir, for your talk. Ms. Kimi gave a three-way speech as a player, as well as coach, and as an actress. Thank you, ma'am, for your speech. Mr. Dinesh spoke on subject as a player. He has experienced the Indian as well as the American playground training and playing basketball in both countries. His talk comparing the best of both countries was very interesting. Thank you, Dinesh. I sincerely thank our principal, sir, and college management for this support. I thank Dr. Devjani Mukherjee, convener of today's webinar and head Department of Psychology, for
guiding us in successful conduct this webinar. My special thanks to Dr. Sumita Singh, Dr. Rinsi B. Abraham, Mahendikar, J. Majju, Chandan Dekate, and all other members of Sports Committee in their assistance and conducting today's program. Lastly, I thank all my colleagues and participants from various institutions for attending these webinars. Thank you.